स्क्रीन विजिबल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर विजिबल है। ओके, सॉरी फॉर मैं फ्राइडे को क्लास नहीं ले सका, आई वाज आउट, तो इसलिए आपका वीकेंड मुझे लेना पड़ गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay ji, so today we are going to see chapter 14. इब्ने माजा से हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होती। तो इस्तग़फ़ार की कई और भी अहादीस में ताकीद आई है कि इस्तग़फ़ार अगर हम की तस्बीह करें या इस्तग़फ़ार करें तो उससे अल्लाह ताला बहुत सी आसानियाँ अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह को इंसान का माफ़ी मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह ने इंसान को बनाया ही गलती करने वाला है, लेकिन अल्लाह को इंसान वो पसंद है जो गलती करने के बाद माफ़ी मांगे, वो पक्के दिल से तौबा करे कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। ऐसे इंसान अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। तो टुडे वी हैव लेक्चर 14. So first part of the middleware technologies was covered in the previous lecture, and this is the second and last part of middleware technologies. It primarily provides an overview of the landscape of middleware technologies, and today we are going to cover three more tiers of middleware technologies. First one is application server, then message broker, and then message business process orchestrators. So this was our classification table or diagram, in which we said that there are 4 layers, and the basic functionality is provided by the lowermost layer, and the highly specialized functionality is provided with the topmost layer, that is BPOs. So it means that as we move upward, the level of sophistication increases. And we covered the bottom layer in the previous lecture, and the other 3 layers will be covered in this lecture. So application servers, as you can see, there are various technologies, for example, J2EE, CCM, and .NET, and various others. But as an example, we are going to see the technologies which are involved in J2EE server technologies that we are going to see today. So an application server is a component-based server technology. So it means it is a combination or amalgamation of multiple components, and various components interact with each other for the task which is in hand. Some components might not be used, and some components which are required, those will be used. But it is an application with a lot of components which collaboratively work together. It resides in the middle tier of N-tier architecture, as we saw in the previous diagram. Then it provides distributed communication, security, transactions, and persistence. So these are some of the sophistications which are provided by such servers. We will cover an overview of one of the leading technology, that is Java EE, and EJB is one of the component technology which is hosted by Java EE.
server technologies. So if we talk about any NTR architecture, for specifically if we talk about Java based, if we want to use Java technologies, then the NTR architecture for any web application may look like as shown in this slide. At the top, you can see we have a client tier, then a web tier, business component tier, and enterprise information system tier. The client tier is for web technologies is most of the time is the web browsers, and there are various kind of browsers. And client tier basically that is any of the browser those interact with web servers, which we say conceptually fall under web tier, and generally they make use of HTTP protocols and various foundational technologies like HTML, CSS, JSP, etc. are used for creating the presentation for the client in the browser. And HTTP protocol, which uses port 80 of the web server, are generally make use uh, with of the web servers. Then the middle tier, the business component tier is there, and for generally, if web servers and business component servers are different, these can be different. For example, EJBs and .NET components generally reside for at business server tier. It may be all the three layers may reside on a single server, or we can have three different servers as well. One server for web tier, one server for business component tier, and one server for enterprise information system tier. So generally, if the servers are different, then web tier and business component tier, they communicate through RMI, which is Java specific technology, or if we want to make use of with some other business tier, some other technology, for example .NET components, then we may resort to .NET remoting or IIOP based communication links. And if it is pure Java, then RMI can also be used for communicating between web tier and business component tiers. Then the bottom one is the database or ERPs. It may be a single database, some modern database, or a legacy ERP applications. And generally for relational database technologies, generally we make use of ODBC and JDBC connectors. JDB is Java technology based connector, and ODB is Microsoft based connectors, and SQL is again one of the foundational language for relational databases. So combination of all these is used to communicate, to establish communication between web component tier and enterprise information tier. So generally, once we talk about these three tiers, all these three tiers fall under application server technologies. These it may be one server, or these may reside on multiple servers as well. So few terminologies you have seen here, for example, RMI or .NET remoting IIOP. Just a brief idea about these technologies. RMI, what is RMI? RMI is a protocol for remote invocation services for Java and only Java. It means that if you want to remotely invoke some objects or classes
then you can make use of RMI, but the both ends should be belongs to Java. जहाँ से आपने इन्वोक कर रहे हैं और जिस चीज़ को इन्वोक कर रहे हैं, both should be pure Java, both ends. So both sides, client and server, have to be Java. Then there is supporting technology, RMI IIOP, which provides interoperability between RMI and Corba objects. So it means that if you want to make on one side on one end you have Java and on the other end you have some other language, then you will be required to use RMI IOP sort of connectors. Corba is one of the technology in which you can write your code. It is just like RMI, but Corba is a multi-language remote invocation technology, whereas RMI is Java specific remote invocation technology. So if some other language is required to be used, then RMI OIOP can make a connectivity between RMI and Corba objects. Similarly, there is another technology that has been introduced that is called IIOP.NET. And from the name, it is clear that it allows seamless interoperability between .NET, Corba and Java J2EE components. तो IIOP में आपका चूँकि ये RMI IIOP भी आ रहा है इसके अंदर, तो तीनों टेक्नोलॉजीज़ को अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो देन दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल IIOP.NET can be used. Then if you want to be Microsoft specific, then Microsoft has developed .NET Remoting. It is Microsoft's API, which can be used as a client with IIOP.NET. तो मतलब यह है कि अगर आपने किसी .NET बेस्ड सर्वर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी है, then you will be required to make use of .NET Remoting APIs. .NET Remoting is complex and as compared to Java and Corba and RMI. So now it has been superseded with Windows Communication Foundation. In short, it is known as WCF, and it is part of .NET Framework 3 plus. So currently we are making use of 4 and 4.5. So for all .NET frameworks which are above 3, for these instead of .NET Remoting, WCF is being provided. Okay, just a brief idea about each layer. First of all, the client tier. The client tier typically comprises an internet browser that submits HTTP requests and downloads HTML pages from a web server. तो जनरल जो हमारी वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इसी तरह काम करती हैं. Nothing special here. This is a commodity technology. इसीलिए जितने भी ब्राउज़र्स हैं they are free. जो भी ब्राउज़र्स हैं बड़े sophisticated ब्राउज़र्स हैं, but these browsers are free because these are considered as commodity technology, and these are developed and these are based on standard protocols and standard technologies like HTML, CSS. These all have implemented the standard technologies for necessary for establishing the communication.
Second tier, which is a web server tier. This tier runs a web server and various web servers which are currently in the market from Microsoft. Internet Information Server IIS is default in platform. For example, if you want to, you can enable IIS in your uh, domestic Windows 10 machine, and जी आवाज़ आ रही है? कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया था। सर आ रही आ रही है। ठीक है। So we were talking about the web tier. So in web tier there are various web servers. One of the important web servers are like Apache, which is an open source web server. Similarly, IIS is from the Microsoft. Tomcat is also one of the servers generally used for J2E based. If you want to do some J2E based development, then Tomcat is more in clients and more popular. If you want to do some PHP JavaScript based development, then Apache is quite close, and seamless integration is also available. And if you want to do some development with .NET technologies like ASP.NET, etc., then IIS is the supporting web server. So anyhow, since we are talking about specifically about the J2EE technologies, then when a request arrives, the web server invokes web server hosted components such as servlets, Java server pages, or active server pages, depending on flavor of web server being used. So if we make use of Apache, then JSP Java server pages or servlets as Apache instead of Tomcat. Tomcat is the right choice for doing development based on J2E technologies like servlet and JSPs. So what is the difference between servlet and JSP? Now it is specific to J2E, what we are talking about. The basic difference is servlet is just like it is HTML in Java. So it means that there will be a .java extension file, and you will be required to insert some HTML code in a Java file, the file which will have extension of .java. On the other hand, the JSP generally implemented in JavaScript is Java in HTML. So you can see that there will be a file, उसका extension .html हो सकती है, और उसके अंदर आप different कोड ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, अगर इफ इट इज जावा टेक्नोलॉजी. Servlet is Java class. It is written like normal Java. Servlet run faster as compared to JSP. Why they are faster? Because Java को कंपाइल हो जाती है, जावा की क्लास कंपाइल हो गई, डॉट क्लास एक्सटेंशन बन जाएगी, तो कंपाइल्ड कोड जो होता है वो we know that it is generally runs faster. It's easier to code JSP than Java servlets.
तो JSP को कोड करना आसान होता है। HTML फाइल के अंदर आप छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स डाल देते हैं। इन MVC आर्किटेक्चर JSP एक्ट्स एज अ व्यू एंड सर्वलेट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर। तो ये भी हो सकता है कि हम अपनी डेवलपमेंट करें तो वी मेक कम्बिनेशन ऑफ JSPs एंड सर्वलेट्स। तो ये भी MVC आर्किटेक्चर में इस तरह होता है। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा MVC आर्किटेक्चर की। So now coming out to the third layer, that is business component tier, and the business component comprise the core business logic of the application. हम कहते हैं जी जब डेवलपमेंट की जाए तो बिजनेस लॉजिक को सेपरेट रखना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन लॉजिक से, डेटा लॉजिक से, उससे सेपरेट रखना चाहिए। सो द सेम इज द कॉन्सेप्ट दैट वी keep our business logic in one particular tier. Business components are realized by, for example, EJBs. EJB stands for Enterprise Java Bean in Java EE technologies, and .NET components और Corba components. तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट J2EE टेक्नोलॉजीज, then Java Bean are the common is a common choice for us. Now coming on to the fourth layer, this typically consists of one or more databases and backend applications like mainframes and other legacy systems. अब मेन फ्रेम से भी उनमें भी डेटा पड़ा होता है, लीगेसी सिस्टम्स हैं लाइक कोबोल एक्सेट्रा, उन पे भी डेटा पड़ा होता है। तो हमें डेटा की हमने सेपरेट टीयर को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं और वी ट्राई टू कीप इट सेपरेट। द बिजनेस कंपोनेंट्स में क्यूरी एंड इंटरेक्ट विद दीज डेटा स्टोर्स टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो ये जो बिजनेस कंपोनेंट्स होंगे जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट टीयर पे रखे होंगे, दोज विल इंटरेक्ट विद वेरियस डेटा स्टोर्स, एंड इनके दरमियान जनरली JDBC और SQL कॉमनली यूज होगी इफ वी आर मेकिंग यूज ऑफ जावा टेक्नोलॉजीज। तो इसमें so up till now we have covered specifically we talked about the server technologies. Within server technologies we have briefly discussed n-tier architecture for any web application, and up till now if there is any question, query, please you may ask. जी एनी आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now as we have seen here that J2E also has a component tiers. So J2E provides a specific component model. उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि किस किस्म का होता है वो जो J2E component model होता है। We call it EJB component model. EJB stands for Enterprise Java Bean. These are basically, beans are basically name for a component, Java component. So this diagram effectively indicates relationship between container and a component. So first of all, the point which you should know is that Java provides a J2EE server provides a concept of container, and in Java J2EE components are enclosed in containers. जितने भी कंपोनेंट हम बनाते हैं we try to keep in the containers.
And container and component relationship goes like a fish and aquarium. तो अब ये देख लें, इसमें समझें ये कंपोनेंट इसके अंदर फिर रहे हैं, and these are enclosed in a container, or container is providing a kind of environment to the fish and various species. So specifically, containers are decorators which wrap their own specialized behavior on top of the component. तो डेकोरेटर पैटर्न हमने देखा था, डेकोरेटर पैटर्न हमने ये देखा था कि डेकोरेटर पैटर्न में हमने कुछ डेकोरेटर्स देखे थे। वो डेकोरेटर ये करते थे कि अपनी, जब एक रॉ कॉफ़ी से हम डेकोरेट करते थे तो डेकोरेटर अपनी कॉस्ट साथ कॉफ़ी के ऐड कर देता था। तो हम ये कहते हैं, हम वहाँ से हमने कॉन्सेप्चुअली ये आइडिया लगाया था, और जो हमने कहा था जी डेकोरेटर जो होता है वो कोई भी अपना बिहेवियर बीच में ऐड ऑन कर सकता है। तो जो ओरिजिनल एक फंक्शनैलिटी है उसमें डेकोरेटर ओरिजिनल फंक्शनैलिटी में अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करके एक ओवरऑल एनहेंस्ड फंक्शनैलिटी बना देता है कंटेनर। द सेम एग्जांपल वी सॉ इन दैट कॉफ़ी डेकोरेटर एग्जांपल, जिसमें डेकोरेटर क्या कर रहा था कि वो अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा था। एक कॉफ़ी की अपनी कॉस्ट थी, जैसे ही डेकोरेटर से रैप किया तो डेकोरेटर से जब हमने पूछा जी क्या कॉस्ट है, तो डेकोरेटर ने कॉफ़ी की कॉस्ट में अपनी कॉस्ट ऐड कर दी थी। सो इट मीन्स द डेकोरेटर एडिड समथिंग। अगर डेकोरेटर के ऊपर एक और डेकोरेटर हमने लगाया तो उस डेकोरेटर ने भी अपनी कॉस्ट ऐड कर दी। सो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेकोरेटर एनीवेयर हियर। So you will see that how that raw and fundamental concept of decorator is being used in the containers in J2EE. For example, you can call one container. Here you can see I'm on slide number 17. There is a rectangular box or rectangle, and it is a container. Let's see. And then there is a component inside a container, and component has pure business logic. And what additional functionality or feature a container can attach with a component? These may be some networking related functionality, efficient multi-threading related functionality, connection pooling, clustering, security related functionality, high availability, and high performance. So as a developer, it becomes easier for you, because you as a developer you only have to are required to focus on a business logic. Otherwise, if you don't put your component in a container, then all such complex functionality will also be required to be added, to be developed or written by the developer who is writing a business logic. So this is the advantage which is provided by the container. Once we wrap our component in a container, so all specialized functionalities are attached, made part of the component, and component makes use of those features or functionality. So this diagram, this is a diagram, slide number 18. This diagram is providing an idea of J2EE model view controller architecture. Here you can see 4 components. One is view component, which is basically owned by the client or handled by the client. Then clients interact with a container controller, which is in J2E technologies, it is developed in a web container. So there is a concept of web container. So controllers are written or created within web containers. And servlet is one of the technique which
helps us to write the controllers. Then the request from a client request goes to the controller, and controller sends its request to the model, and models are generally implemented in Java Beans, which is EJB technology, and these technologies generally reside in EJB containers. अब एक और तरह का कंटेनर आ गया ये EJB container. And then if there is requirement of fetching a data, then the specific request for data fetching or data manipulation will be sent to the database. Database will return its data. Data will be once the data will be received by the model, model will enrich itself, and then it is going to send the data to the servlet. Servlet will prepare a sort of HTML page for the client or any presentation view will be created by the servlet, and then data as well as specialized view will be sent back to the client. So this is how J2EE MVC architecture works. It is now I am on slide number 19. Here, as you can see, there are three specific columns. It is further explanation of the previous diagram which we saw originally about N-tier architecture. Here you can see there is a client tier. This is a client tier. This is web tier, and this is business component tier, and then it is the bottom layer which is EIS, that is enterprise information system tier. So it provides a bit more idea about the J2E technologies. That is, if we are making use of some browsers. So obviously, if you are making use of browser, then HTML, applets, DHTML, scripting, JavaScript, all such technologies are used in the browsers, and browser interact with the web tier through HTTP technologies, and in web tier you will find some web server and some servlet or JSP pages which are created by the web server. That server side code will reside in the web tier, and web tier and business component tier, if it is a pure Java technology, they are going to communicate over RMI protocols. And if we talk about business component tier, then there would be some sort of enterprise Java beans. Those will reside in business component tier, and there might be various other technologies like JTS, JMS, Java transaction systems, Java messaging service, Java transaction service. So these are again some specialized technologies. So such technologies reside on business component tier. Now, if it is as far as EIS tier is concerned, if there are some legacy applications like mainframes, COBOL, other ERPs, so there is a specialized connector known as JCA. So the connectivity is established through JCA technology. On the other hand, if these are pure relational databases like Oracle or MySQL or other databases, though, then for these RDBMS databases, just JDBC based connectivity would suffice. So this diagram basically provides a bit more idea. Okay, this is left. Now, if it is also possible that you create some desktop applications in Java instead of using browsers.
So if a pure desktop application has to interact with the component, then web server is not required because web server is needed for the browser. So straight away Java RMI based connectivity connector protocols can directly communicate with the business component tier. So in this case, it will become a three-tier architecture, 1, 2, and 3. And similarly, if you have dot applications in some other technologies like Windows components, etc., then instead of Java RMI, you may use some other corresponding bridges like COM bridge, RMI over IIOP, etc. So then with any window client can also will be able to communicate with the J2EE based component Java component tier. And so I have covered almost everything. Any question on this slide? ओके तो आगे चलते हैं. जस्ट अ लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट इज JCA. यहाँ पे पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था कि JCA is one of the technology which is used for connecting with various other non-RDBMS services. So JCA stands for J2E Connector Architecture. JCA defines a standard architecture for connecting to the Java J2E platform to heterogeneous EIS systems. जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि EIS tier है और यहाँ पे ERPs हो सकती हैं, DBMSs हो सकती हैं और फिर दूसरी तरफ मल्टीपल किस्म के क्लाइंट्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कुछ और डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, मेन फ्रेम्स हैं. So these so JCA has been specifically designed for this purpose. Example of EIS systems include ERP, mainframe, transaction processing, database systems, legacy applications which are not written in Java programming language. किसी और language में लिखी गई हैं तो then JCA will come into action. As I mentioned earlier that there is a concept of a container. So container is not just one kind of containers. There are three kinds of containers. If we want to write a client application, rich client application that application may be using the application client container. फायदा आपको मैंने पहले बता दिया था कंटेनर यूज करने का क्या फायदा होता है. तो जब आप रिच जावा क्लाइंट एप्लीकेशन को लिखेंगे तो दैट मे रिक्वायर एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर ताकि आपकी कनेक्टिविटी और एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएं. एंड एप्लीकेशन क्लाइंट विल बी सो डेवलपर को ये फ़ायदा होगा कि वो सिर्फ बिजनेस लॉजिक को लिखेगा. देन देर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वेब कंटेनर and generally servlet and JSP pages, these reside in a web container. On the other hand, enterprise Java beans, these reside in EJB containers. And generally both these technologies belong to J2EE server. ये हम वेब कंटेनर और EJB कंटेनर एक मशीन पे भी हो सकते हैं और मल्टीपल मशीन्स पर भी हो सकते हैं. And you can see that containers would communicate with each other and their communication will be easier because it is a same technology. And similarly server can communicate with the database machines as well. Okay, now some idea about these EJBs. EJBs जनरली कैसे उसको प्रोग्राम किया जाता है और हाउ इट लुक्स लाइक. सो EJB कंपोनेंट मॉडल को अगर हम देखें तो जावा EE
वर्जन 5 एंड प्लस, यानी कि 5 के बाद, then it defines two main type of EJB components. One is called session bean and another one is called message driven bean. Then earlier versions defined entity beans as well. तो पहले 5 से पहले तीसरा बीन भी होता था which was called as entity bean. But now it is replaced with Java persistent API. तो आजकल ये यूज करते हैं हम Java persistent API. What is this Java persistent API? It provides object relational mapping. In short, we call it ORM, facility for Java application that need access to relational databases from server tier. तो ORM का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, तो साथ साथ उसकी जो कनेक्टिविटी, साथ साथ उसके टेबल्स, हर क्लास के अपने टेबल्स क्रिएट होते जाते हैं डेटाबेस के अंदर. आपको स्पेसिफिकली कोई, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ मैपिंग होती है उसकी. फ़ायदा क्या होता है कि आपको अलग से डेटाबेस इंटरेक्ट के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता. डायरेक्टली आपका जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, क्लासेस बन रही होती हैं, दीज persist in a relational database. तो ये seamless connect for providing a seamless connectivity between objects and relational database. This ORM technology has been provided. It is, that's why we call it object relational mapping. तो ये कई तरह के इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं. For example, one was known as entity framework, which is an open source ORM. Entity framework is an open source ORM framework for ADO.NET, and it is part of .NET framework. Similarly, there is another brand name known as N-Hibernate. This is also a kind of ORM solution for Microsoft.NET. और सिंपल हाइबरनेट भी होता है, नाम सुने हुए होंगे आपने. तो दीज ऑल और इस और भी बहुत से इम्प्लीमेंटेशन ORM की मिल जाएंगी जो अवेलेबल होती हैं. तो ये बेसिकली इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डेप्रिकेटिंग एंटिटी बीन्स, जबकि सेशन बीन, मैसेज ड्रिवन बीन, दीज आर स्टिल इन वोग. Briefly, message driven beans. ओके, तो आवाज आ रही है? यस सर. तो बेसिकली am I connected? Getting some signals of disconnection. I hope everybody can listen to me. यस सर, आवाज आ रही है सर अभी. यस सर, आवाज आ रही है सर. अच्छा, so these are two signature technologies of EJB, session bean and message driven bean. So let's have a preview of these technologies in next slides. First of all, session beans. Excuse me sir, slide. Session beans are typically, जी आ गई सर, थोड़ी डिले आ रहा है इसमें. ओके. हाँ, स्लाइड्स में. अच्छा,
So I am on slide 23. सर स्लाइड शो नहीं हो रही If अब भी you हो all रही are, चलिए मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ. जी सर विजिबल है चले. So we are going to talk about session beans. It's one of the representative technology of J2E. Session beans are typically used for executing business logic and to provide services for clients to call. And there are two types of session beans. One is called stateless session bean, and another one is called stateful session bean. So what is the difference? The stateless session beans are non-conversational with respect to its calling process. मतलब क्या हुआ इसका? This means that it does not keep any state information on behalf of any client that calls it. यानी कि इसमें आपकी स्टेट इंफॉर्मेशन प्रिजर्व नहीं कर सकते ये बीन्स. फॉर एग्जांपल आपने कहा जी x इक्वल टू 4. अब x इक्वल टू पिछले सेशन में आपने x इक्वल टू 4 आपने सेट किया था, तो जैसे ख़त्म करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन है ये सेव नहीं कर रखेगा. तो इसका मतलब है कि जो इस बीन को यूज़ कर रहा है स्टेट को सेव करने की जिम्मेदारी उसकी अपनी है. यानी वो अगर x इक्वल टू 4 कोई अपना स्टेट रखी है तो वो फिर अपने पास रखेगा क्लाइंट, नॉट ऑन द सर्वर. क्लाइंट साइड पे अपने पास रखेगा कि जी मैंने इस x इज इक्वल टू 4 किया था, या 2 + 2 फॉर एग्जांपल 4 होता है, तो आपने सेशन बीन से काम लिया प्लस कराने का, ऐड कराने का. अब आंसर 4, वो आंसर 4 क्लाइंट अपने पास दोबारा पुल करेगा और अपने पास रखेगा, सेशन बीन में सेव नहीं करवा सकता. दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वर्सेशनल विद रिस्पेक्ट टू द calling process. अच्छा, stateful session bean is conversational with respect to its calling process. That it can keep a state. I'm on slide 24. सबको नजर आ रही है 24? किसी को ना आ रही हो तो बताएं. Okay, so this diagram will elaborate the idea. For example, it is an EGP container. Here there is a pool of stateless beans, and at the bottom there are 3 stateful beans. Now if these are clients, these are EJB clients. Now if client to ask for some processing to the stateless bean, then whatever will be the result has to be pulled back by the client, and client is required to maintain the states of the session, because stateless beans cannot save the state. On the other hand, in the stateful beans, these can maintain the state. आप रिजल्ट आपने सेव कराना है, इसमें सेव करा सकते हैं और उसको अगले सेशन में उसको दोबारा फर्दर वहीं से आगे प्रोसेस कर सकते हैं, या उसको फर्दर यू कैन मेक यूज इन एनी फ्यूचर सेशन एज वेल. तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो then the questions come in when we should use stateless beans and when we should use stateful session beans. So the guideline is that if a task or a process can be done in a single step by a single method call, stateless is the right option, like authentication process. For example, login करना है आपने, तो लॉगिन करके तो आपने एक दफ़ा अगर वो हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो यू विल मूव फॉरवर्ड. आपको कोई दोबारा आना नहीं है लॉगिन के लिए. तो इस तरह की कोई छोटा काम हो करना हो तो यू कैन मेक यूज ऑफ स्टेटलेस बीन. On the other hand, if task needs a series of method calls, more than one, and you need to keep previous results to use them in the next call,
Then go for stateful, like shipping process. You might have to first of all select item, then add or remove item, then you might have to do some sort of transactions. So this is conceptual difference between stateless and stateful session beans. And the third category is, that is, one was session bean and another one in message driven bean. The second major category of is the message driven. Message driven beans are lightweight components used for communication via, for example, email or instant messages. In MDB, the message service is asynchronous, is in asynchronous mode because user is not intended to get the instant result. तो जैसे हमने पढ़ा था मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर टेक्नोलॉजी देखी थी, तो ये समझ लें कि उसकी फर्दर एक तरह की एनहेंसमेंट है, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर की एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन है, ये समझ लें आप सर्वर में. मोस्ट कॉमनली एमडीबी इम्प्लीमेंट जावा मैसेज सर्वर टेक्नोलॉजी, और फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि जो MOM है उसकी सर्वर इम्प्लीमेंटेशन है एक तरह की, ये सर्वर में. फॉर एग्जांपल देयर इज एन एप्लीकेशन क्लाइंट, इट सेंड्स अ मैसेज विल गो टू JMS सर्वर, जावा मैसेजिंग सर्वर, और सर्वर में क्यूज इम्प्लीमेंटेड होंगी, तो क्यू में मैसेज आ जाएगा. मैसेज जब क्यू में आ गया तो इसको ओके मिल जाएगा क्लाइंट को, जी मैसेज आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब आप बेफिक्र हो जाएं, अगला काम हमारा है. Now once the server will be ready, it is going to server will get an event. इसको यहाँ पे जैसी कोई मैसेज क्यू से रेलिवेंट में मैसेज आएगा, इसको एक मैसेज, इसको इवेंट ट्रिगर हो जाएगा इसका कि जी एक मैसेज आया हुआ है मेरे पास. अब इसका काम है इससे कब पुल करना है मैसेज को, तो ये मैसेज अपना कोड होगा इसमें तो पुल करेगा. अब जो J2E सर्वर है इसके अंदर मैसेज ड्रिवन बीन का इंस्टेंस होगा, ये इंस्टेंस यहाँ से मैसेज पुल करके उसको प्रोसेस करेगा, और जो MDB मैसेज ड्रिवन बीन का इंस्टेंस होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ EJB कंटेनर, एंड EJB कंटेनर विल बी पार्ट ऑफ J2E सर्वर, and JMS server and J2E server, these are two different concepts. These, it may reside on the J2E server. JMS server is a ये इसके ऊपर भी reside कर सकता है और separate भी हो सकता है. ओके, तो ये आपको मैंने अभी तक सेशन बीन्स का बताया and a message driven bean. Then I explained you that there are two kinds of session beans. One is stateless session bean, and another one is stateful session bean. और मैसेज ड्रिवन बीन का आपको बताया मैंने कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ सर्वर लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOM technology, message oriented middleware technology. Okay, so now let's see how we program it. I have tried to keep it as simple as possible. So what we do, once we try to create a stateless session bean, आपने दो काम करने होते हैं. एक तो आपने रिमोट बिजनेस इंटरफेस बनाना होता है, और फिर सेशन बीन क्लास. To create EJB component in EJB version 3, the developer must provide remote business interface and session bean class. The remote interface contains business methods offered by the bean. तो जो remote business interface होगा ये remotely visible होगा, और पता होगा कि ये interface में कौन कौन से methods available हैं for making use. So this is how an interface looks like. Nothing as far as syntax is concerned, it is just like a Java interface syntax.
one thing special, there is annotation @remote. तो जावा में एनोटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सिंबल यूज करते हैं एंड देन वी प्लेस सम एनोटेशंस। तो जब हम @remote लिखते हैं इंटरफेस के साथ, तो जावा बैकएंड पे ये J2E बैकएंड पे अंडरस्टैंड करता है कि ये इंटरफेस आम प्रोग्रामिंग इंटरफेस नहीं है, रादर इट इज अ रिमोट। तो ये बैकएंड पे पता है, तो फिर उससे ये होता है कि वो फिर बहुत सी आपको एडिशनल कोड लिखना नहीं पड़ता, इट ऑटोमेटिकली इन्वोक दैट पर्टिकुलर कोड। बाकी ये इंटरफेस में आपको देखें तो 3 मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं। वन इज न्यू काउंट with some parameters, then buy stock with some parameters, then update account with 3 parameters. So there are 3 methods which have been declared in interface known as broker. तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने ब्रोकर नाम रख दिया डेवलपर ने। तो अब ये एक ब्रोकर नाम का रिमोट इंटरफेस बन गया है जिसमें 3 बिजनेस मेथड्स हैं। तो पहला काम ये करना है डेवलपर ने। Little idea about the remote annotation. First of all, what is the advantage of annotation? Annotation is a modifier like meta tag that provides the ability to associate additional data along with Java classes, interfaces, constructors, methods, fields, parameters, local variables. इन सब के साथ annotation लग सकती हैं। The biggest advantage of annotation is that they significantly reduce the amount of code a developer needs to write. ठीक है, बहुत सा जो डुप्लीकेट टाइप कोड है, जो कि एक फिक्स कोड है, वो कोड ऑटोमेटिकली वो डेवलपर को नहीं लिखना पड़ेगा सिर्फ एनोटेशन डालने की वजह से, तो बैक एंड पे वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। रिमोट अलाउज those beans to be called from clients in other JVMs located on other remote machines. तो ठीक है, तो ये अगर हम रिमोट का इंटरफेस लगा देते हैं उसके साथ, तो वो फिर अब वो विजिबल हो जाएगा दूसरी JVM पे, दूसरी मशीन्स पे एक्सपोज हो जाएगा इंटरफेस। From the point of view of EJB container, any code in another JVM is remote. तो रिमोट जो है, हम किस चीज़ को रिमोट कहते हैं? हर मशीन पे एक JVM इंस्टॉल्ड होती है, तो अगर किसी और मशीन की JVM है, उस मशीन किसी और मशीन पे के लिए any other machine will be considered as a remote because it has a different JVM, क्योंकि हर मशीन पे एक JVM होती है। तो अगर आप JVM से एक JVM से दूसरे JVM पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग रिमोट। अच्छा, अब इंटरफेस बना लिया, उसके बाद हमने क्लास बनानी है which will implement the interface. So here we are defining a class broker bean which will implement broker interface. इसको भी एनोटेशन हम दे रहे हैं स्टेटलेस की। तो जावा बैकएंड पे अंडरस्टैंड करेगी कि जी ये आम क्लास नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का स्टेटलेस जावा बीन की क्लास डिक्लेयर हो रही है। तो इससे जो भी सपोर्टेड कोड होगा वो आपको बैकएंड पे खुद ही इन्वोक होगा, डेवलपर को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर जो 3 मेथड हमने ब्रोकर के बताए हैं, वो फिर those 3 methods will be implemented in this class. Method defined here, not shown. The stateless annotation states that this class is a stateless session bean and business interface is used to invoke it. तो अभी तक हमने 2 काम देख लिए। हमने देखा जी रिमोट इंटरफेस हमने इम्प्लीमेंट डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, फिर एक क्लास बनानी है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी ब्रोकर उस पर्टिकुलर इंटरफेस को, रिमोट इंटरफेस को। 2 काम हो गए। नाउ क्लाइंट साइड, अब ये तो होगी थी सर्वर साइड थी। अब क्लाइंट साइड पे हमने इसको कैसे फेच कैसे करना है दूसरी JVM पे।
Assessing an EJB by its client in EJB3 is very simple indeed, requiring the use of @EJB annotation. तो अब ये देखें यहाँ भी एक annotation इस्तेमाल कर रहे हैं @EJB, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक @EJB लिखा है and we are creating an instance of the class. ये broker bean class हमने पीछे डिफाइन किया है. broker bean class इसका हमने एक इसका एक हमने वेरिएबल बना लिया, ब्रोकर बीन ब्रोकर. ठीक है, तो एक इसका इंस्टेंस बन जाएगा जो कि EJB होगा. और फिर इसमें एक अगर अब वी कैन स्ट्रेट अवे मेक यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्रोकर डॉट अपडेट अकाउंट. अब 3 मेथड में से एक मेथड था अपडेट अकाउंट, सो वी आर मेकिंग यूज ऑफ द मेथड अपडेट अकाउंट एंड वी आर पासिंग सम पैरामीटर्स. So this is how it's quite simple to remotely instantiate any class. सिर्फ annotation का जादू है यहाँ पे. EJB client may be standalone Java application, servlet. ये जो client है, client कोई भी Java application हो सकती है, servlet हो सकता है, applet हो सकता है, कोई और EJB हो सकता है, एनीथिंग, किसी में भी ये काम कर सकते हैं, किसी चीज में भी. क्लाइंट इंटरेक्ट विद द सर्वर बीन एंटायरली थ्रू द मेथड डिफाइंड इन द बीन्स रिमोट इंटरफेस. तो अब उसको ये मेथड एक्सपोज होगा, वो अपडेट अकाउंट का मेथड एक्सपोज है, उसको यूज कर लेगा. हाउ डज EJB क्लाइंट लोकेट, ये क्वेश्चन हो सकता है जी, लोकेट कैसे करेगा, उसको लोकेट करेगा तो फिर ये ब्रोकर को भेज सकता है ना. तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो इस लिंक पे पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे उसको लोकेट कैसे करता है नेटवर्क पे. एक दफ़ा लोकेट कर लिया, फिर काम ऐसे ही करना जैसे आप डेस्कटॉप पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंगल मशीन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हैं. लोकेट करने के बाद, लोकेट करने का प्रोसेस एक फिक्स प्रोसेस है, उसको देखना पड़ता है. Any questions so far? Okay, so we move forward. You can also see an example. You can see an executable example of stateless bean on this link. Okay, so difference in stateful session bean. अब पहले हमने स्टेटलेस डिस्कस किया था, अब आगे हम स्टेटफुल पे. तो स्टेटलेस कॉन्सेप्ट जो स्टेटलेस में भी देखा आपने, कॉन्सेप्ट वही चलेगा इसमें भी, लेकिन क्योंकि ये स्टेट मेंटेन करता है तो थोड़ा सा आपको एडिशनल काम भी करना पड़ता है. द प्रोसीजर फॉर स्टेटफुल सेशन बीन इज प्रीटी सिमिलर यूजिंग स्टेटफुल एनोटेशन. तो इसमें हम स्टेटलेस की जगह, उसमें हमने स्टेटलेस एनोटेशन यूज की थी, इसमें हम स्टेटफुल एनोटेशन यूज करेंगे. पहला तो ये डिफरेंस आ गया. Then stateful session bean should also provide a bean specific initialization method to set up bean state. क्योंकि ये स्टेट मेंटेन करता है तो उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए इनिशियलाइजेशन मेथड होंगे. एंड देयर विल बी अ मेथड, जो इनिशियलाइजेशन मेथड होगा, देन देयर विल बी अ मेथड एनोटेटेड विद रिमूव. एक ये रिमूव का मेथड भी इसमें हमें अलग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, which is called by the client to indicate they have finished with this bean instance. तो वो रिमूव एक मेथड होगा जिसकी एनोटेशन होगी रिमूव. उस मेथड को कॉल करना होगा ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारा सेशन कंप्लीट हो गया एंड वी आर क्लोजिंग डाउन, सो प्लीज स्टैंड डाउन. अपने जो है अपना डेटा है उसको सेव कर लें आप. तो ये जनरल ब्रीफ सा आइडिया था अबाउट द स्टेटफुल सेशन बीन. नाउ कमिंग ऑन टू मैसेज ड्रिवन बीन. एग्जांपल अगेन, just an idea. Message driven beans are pretty simple to develop too.
in the most common case of message driven being receiving message from a JMS server. आपको मैंने डायग्राम पीछे दिखाई थी कि JMS सर्वर होता है और JMS सर्वर क्यू मेंटेन करता है, फिर मैसेज ड्रिवन बीन जो है वो उसमें होता है। एक मिनट में आपको पीछे और दोबारा स्लाइड पे एक दफा ले जाओ। ये दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मैसेज ड्रिवन बीन। देयर विल बी एप्लीकेशन क्लाइंट, इट विल सेंड अ मैसेज, इट विल कम इनटू अ जेएमएस सर्वर, यहाँ पे क्यू मेंटेन होगी। अब इस मैसेज को कंज्यूम करना है J2E सर्वर में MDB इंस्टेंस ने। तब MDB इंस्टेंस ने इस मैसेज को कैसे कंज्यूम करना है, जो कि J2E सर्वर में पड़ा है। इट इज कंपोज्ड इन EJB कंटेनर। तो ये डायग्राम ध्यान में रखें। वापस चलते हैं, बल्कि इसको कोई हर्ज नहीं है अगर आई कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट। अब भी रखता हूँ दोबारा। मैसेज ड्रिवन बीन, so message driven beans are pretty simple to develop too. In the most common case of message driven bean receiving message from JMS server, the bean implements Java XMS message listener interface. अब ये बीन ने ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, पहली बात तो ये है। इन एडिशन दूसरा क्या काम करना है, यूजिंग मैसेज ड्रिवन एनोटेशन, और ये दूसरी एनोटेशन यूज करनी है मैसेज ड्रिवन की। द डेवलपर स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि जो क्यू है, जिस क्यू से उसने मैसेज लेना है, फ्रॉम विच बीन विल कंज्यूम द मैसेज। मैसेज ड्रिवन एनोटेशन वाज एडेड इन AGB टू अलाउ इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग। थोड़ा उससे और काम हमारी डेवलपमेंट आसान हो जाती है। And MDB is just listens to any incoming message on, for example, JMS queue। तो ये देखें यहाँ पे, पहले तो ये एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं हम मैसेज ड्रिवन की, और साथ ही जो डेस्टिनेशन है उसका हमने लोकेशन बता दिया है, मैप नेम JMS ब्रोकर क्यू। अब इस क्यू से क्योंकि मैसेज उसने कंज्यूम करने हैं तो क्यू का साथ ही अपने रेफरेंस दे दिया है और साथ मैसेज ड्रिवन है। अब क्या होगा कि ये जो क्लास है, वी आर क्रिएटिंग अ क्लास मैसेज बीन ब्रोकर मैसेज बीन। तो ये क्लास दिस जावा विल अंडरस्टैंड, J2E विल अंडरस्टैंड सर्वर कि ये आम क्लास नहीं है बल्कि ये मैसेज ड्रिवन बीन बना रहे हैं। एंड इट विल इम्प्लीमेंट मैसेज लिसनर, ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि एक उसने मेथड इम्प्लीमेंट करना है विच इज़ काइंड ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। जैसे ही मैसेज रिसीव होगा ये वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा, ऑन मैसेज वाला। तो जैसे ही मैसेज रिसीव होगा इट विल रिसीव मैसेज इन MSG वेरिएबल, और इस मैसेज को आप जहाँ भी रखना चाहें, उसको जो भी प्रोसेस करना है प्रोसेस कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ इवेंट ड्रिवन। जैसे ही ये कोई इस बीन से रिलेटेड कोई मैसेज रिसीव होगा, क्यू में आएगा, इसको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जी इवेंट इन्वोक हो जाएगा कि जी मैसेज अवेलेबल है, आप उसको प्रोसेस कर लें। सो दिस हाउ इट वर्क्स। ओके, सो it ends our first part of the lecture, that was application servers। एप्लीकेशन सर्वर में हमने स्पेसिफिकली J2EE को देखा है। इसमें इन इट वी सॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर, and then we said there are
it's not one container, there are multiple containers in J2EE, and containers provide some additional services. They work as a decorator. फ़ायदा क्या होता है कि जावा जो प्रोग्रामर है उसको सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक लिखनी पड़ती है, एंड वंस इट कंपोजेज इट इन द कंटेनर, एडिशनल फंक्शनैलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द कंटेनर। फिर हमने देखे इसमें कंपोनेंट्स, सेशन बीन और मैसेज ड्रिवन बीन। सेशन बीन में हमने कहा दो तरह के सेशन बीन होते हैं, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस। और फिर हमने प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल्स देखी उनकी कि कैसे इनको करते हैं। सो वी अंडरस्टैंड जो मैसेज गिवन वाज दैट there is a standardized way of creating these AGVs, and as we are moving in the additional technologies, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है, the programming job of for a programmer is getting simpler. तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी मेरे ख्याल में हैवी डोज थी, मैं भी बोल बोल के। Okay, so we'll take a break. It is 6:49. I think we can start after Maghrib 7:30 पे। बाकी फिर हम स्लाइड्स उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। Right. Right.